इनकम्प्लीट या हुक सेंटेंस आता है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट की तरह, कि जो है फॉर इंस्टेंस वन डे आई वाज सिटिंग इन माई रूम ड्यूरिंग नाइट टाइम, इट वाज 11 o'clock in the night, I was preparing for my exams and suddenly। देखिए, आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, रात के टाइम आप 11 बजे तक पढ़ रहे थे, बाकी सारी फैमिली सोई है, और सडनली द डोर नॉक्स, यहाँ पे दरवाज़ा खटकता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इस टाइम कौन आ सकता है, ये वो, तो आप अपने माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट करना शुरू करते हो। तो सडनली उसके बाद क्या हुआ, वो आपने अपने माइंड में एक स्टोरी बनानी होती है। यहाँ पे देखें, जब आप इस स्टोरी को बहुत कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लेके जा सकते हैं। देखें, अगर आप ये कहें कि जो है मैं आई वॉज सिटिंग इन माई रूम एंड सडनली द डोर नॉक्ड, एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंड, आई क्लोज्ड माई बुक्स, आई थॉट दैट हु कैन बी एट दिस टाइम, nobody is awake in my home, only I am preparing for tomorrow's exams, so who can be that person? And creating these questions in my mind, I was completely frustrated and I was shocked that who can be at my door. Now these are the things you are writing in the you can say that story. And then a thought came into my mind whether I should open the door or not. For instance, if I open the door, somebody who is very strange can harm me, or he can, you can say, do anything that can be very much disadvantageous, that can be very much destructive for me, or he can be a thief, he can enter into my home and steal away the things. So I was confused that whether I should open the door or not. And then I mustered up some courage and went to the door and put my ear on the door to witness, to feel whether there is someone or not. And then slowly and very silently I opened the door, and there I saw, when I opened the door, I saw that any, you can say, substance that was like a wrapper or something that was or any, you can say, plastic made substance that was touching the door owing to the wind blowing outside, and it was causing the knocking at my door. And I was laughing at myself that how foolish I am, and I could not differentiate whether it is a proper knocking at the door, somebody is knocking, or it's a substance that is causing the, you can say, knocking at my